Yeah, is it visible? Yes, ma'am. Yeah, my screen is visible. So today Yes, we'll ma'am. start with functions of ecosystem. ଆମେ ecosystem ର definition ପଢିଲେ ସେଦିନ ଆଜି we will start with ecosystem ର function. Ecosystem is a broad, vast and complete dynamic system. It can be studied under the three heads: energy flow, nutrient cycling and ecological succession or ecosystem development. So basically आज मैं energy flow ऊपर focus करीबी. As you all know, this is a crash course. मतलब difficult हो जाए सब जिनसे को elaborately एठी पढ़े को. If you want elaborate classes like proper class for environment ecology, please say WhatsApp group रे request छाड़ो. We will plan accordingly and we'll start up. Okay. I'm now wait करवानी. We'll start. I have to complete wind up these ecology and environment in 8 sessions. So 8 sessions रे entire thing cover करिबा मो पाई possible नहीं. So we'll start with energy flow. Energy is the basic force responsible for all metabolic activities, and these metabolic activities refers to the activities that takes place in the living organisms. The flow of energy from producer to top consumers is called energy flow, which is unidirectional. एठी हमारा producer रहबा एठी consumer रहबा केबे consumer रू producer को energy flow करिबानी. The study of trophic level interaction in an ecosystem gives an idea about energy flow through the ecosystem. किछि कया काहा को पचारियार अछि मते के कहि परिबे ट्रॉपिक लेवल्स जो कहली तार माने कोन कि किछि भी व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स कि किछि भी के जानि छंती या रिलेटेड मैडम ये ऑप्शनल क्लास होती कि कोन कहले एटा ऑप्शनल का So this is not optional. It optional class no है. It environment ecology class GS paper 3 रा part and prelims रा part रे रहू ठीक है. It optional no है. ओके मैम थैंक यू हमते कहबे टॉपिक लेवल रो के कोन बुझु चंती या किछि भी टर्मिनोलॉजी जोटा या मन को आसुची टॉपिक लेवल्स हमें सुनिले मैडम खाद्य स्तर जो कहते उड़िया रो सेटा. अच्छा खाद्य स्तर. अच्छा आमे जन जानछ ना Ma'am, entity in the food chain. ओके ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स ए सब माने ऑटोट्रॉप्स जे कि निजरा प्रोड्यूस करंती खाइबा हर हेटेरोट्रॉप्स रे हमर आसीबे हर्बिवोर्स कार्निवोर्स ए माने सब गोटे गोटे ट्रॉपिक लेवल और ट्रॉपिक टा इज derived from the word called trope which means nourishment. Okay. So trophic level interaction deals with how the members of an ecosystem are connected based on the nutritional needs. Say to nourishment. Okay, energy flows through the trophic levels from producers to subsequent trophic levels. This energy always flows from lower to higher. Okay. It never flows in the reverse direction, that is from carnivores to herbivores to producers. There is a loss of some energy in the form of unusual heat at each trophic level, so that energy level decreases from the first trophic level upwards. जते जते अप को जाउथबो सेतिकी सेतिकी एनर्जी लॉस भी हेई चालुथबो किछि अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हेई चालुथबो एमति नय कि एग्जैक्टली जेतिकी गोटे प्रोड्यूसर पाखरे एनर्जी अछि सेतिकी ट्रांसमिट हबो ऊपर को नो किछि एनर्जी अनयूजेबल हीट भाबरे बाहर को जिवो. As a result, there are usually 4 or 5 trophic levels and seldom more than 6, as beyond that little energy is left to support any organism. So we have एमती हमें जो pyramids बनाऊ ना we have this 1 2 3 4 5 या फिर केबे केबे 6 भी थाए. एठी हमारा प्रोड्यूसर हर्बिवर्स कार्निवर्स फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी एमती हिकरी सब थिबे. Next, trophic levels are numbered according to the steps of an organism is away from the source of food or energy, that is the producer. The trophic level interaction involves 3 concepts: food chain, food wave, ecological pyramids. So एटा को हम एमती बुझिबा कि गोटे ट्रॉपिक लेवल को पढ़िबा को या
ट्रॉपिक लेवल्स रो इंटरेक्शंस को पढ़िया को हमें जेतले गोटे यूनिट को कंसीडर करिबा फर्स्ट हमें फूड चेन को धरिबा देन मल्टीपल फूड चेन्स जेतबेले आसीबे दैट विल अगेन फॉर्म फूड वेब एंड फिर सेठू हमें स्टडी करि परिबा गोटे इकोलॉजिकल पिरामिड्स फॉर एग्जांपल दिस इज वन फूड चेन दीज आर प्रोड्यूसर ये गोटे हार्बिवर जे ग्रासहॉपर जे गछ को प्लांट को खाइला फिर ए ग्रासहॉपर को खाइला ए माउस then this mouse is being eaten by the snake in turn is eaten by the eagle फिर जेतले मरिला ताको फंजाइज ब्रेक डाउन करी की ता बॉडी को nutrients the break them into the nutrients which is again taken up into the soil mixes with the soil humus habo humus porosity plant growth habo so एठी ग्रेजुअली ये सपोज ये जति की भी एनर्जी पड़ने थिला सेथुरु किछटा लॉस हेची टिके आगु को जाईची एंड एमती धीरे धीरे हेकरी हमें सेमती भी कंसीडर करि पारी आई मीन बुझी पारिबा so this is one example of food chain. Food chain organisms in the ecosystem are related to each other through feeding mechanism or trophic levels, that is one organism becomes food for another. A sequence of the organisms that feed one another form a food chain. जोड़ा हमें previously देखले जो sequence जो जाइथिला producer, herbivore, then carnivore, then से carnivore को आगोटे carnivore खाइला and gradually से degrade हेइकिरी decompose हेइकिरी soil रे मिसला इटा गोटे chain. The sequence of eaten and being eaten produces transfer of food energy and it is known as food chain. गोटिए definition मन रखियार अछि जदि भी मेंस रे आसला किछि ज़्यादा डेफिनेशन को फोकस न करिकी पूरा गोटे लाइन डेफिनेशन या दी लाइन डेफिनेशन जोड़ा फंडामेंटल डेफिनेशन रहिबो एक्सप्लेन करिया को एग्जांपल्स को एलाबोरेटली निज लैंग्वेज रे करिवेटा बेटर अदर नहले टाइम वेस्ट हे जिवो डेफिनेशन ऊपर बेसी फोकस करिले हमको 20 टा क्वेश्चन जदी यूपीएससी पैटर्न रे जाउची तो 20 टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करयार अछि हमें हम टाइम इकोनॉमी को दबा एइथरे हमें टाइम जल्दी प्रिपेयर हेकी थिबा हमें जल्दी हमको मार्क इमती मिल जिवो इजीली हमको. Types of food chains: grazing food chain and detritus food chain. The consumers which start the food chain utilizing the plant or plant part as their food constitute the grazing food chain. In terrestrial ecosystem, grass is eaten up by the caterpillar or grasshopper in the previous example, which is eaten by the lizard. Is eaten by the mouse. Lizard is eaten by the snake. In aquatic system, phytoplanktons is eaten by zooplanktons, which is eaten by fishes. Fishes thereby are eaten by pelicans. Pelicans are birds. Then detritus food chain. It starts from the dead organic matter of decaying animals and plant bodies consumed by the microorganisms, then to detritus feeding organisms called detrivores or decomposers to other predators. Little earthworms, chicken, hog, detritus food chain. इतरे little or the little earthworms जो माने समाने detrivores परिका भी काम करिवे. Next, we have the distinction between these two food chains is the source of energy. For the first level consumers, in the grazing food chain, the primary source of energy is the living plant biomass, while in the detritus food chain, the source of energy is the dead organic matter or detritus. यार major difference है एटी primary source होची living और एठरे dead detritus living grazing. Now we have food wave. A food chain represents only one part of the food or energy flow through an ecosystem and implies a simple relationship which seldom occurs in the ecosystem. A food wave in turn illustrates all possible transfers of energy and nutrients among the organisms in an ecosystem, whereas a food chain traces only one pathway. जेमती कि इति grasshopper, frog, owl. ए frog को snake भी खाई पारिबो, owl भी खाई पारिबो. Okay, ए mouse को owl भी खाई पारिबो, hawk भी खाई पारिबो, and this fox भी. So, interconnected food chains. जोठी हमें study करिबो पूरा सेटा को food web कहिबा. Next, we have ecological pyramids.
The step of trophic labels expressed in a diagrammatic way are referred to as ecological pyramids. Good diagrammatic manner re jetale ame study karibu that these are called as ecological pyramids. The food producers forms the base of the pyramid and the top carnivores forms the tip of the pyramid. Other consumer trophic labels are in between. The ecological pyramids are of again three categories. Tinta category ro pyramids amara thae pyramids of numbers, biomass, energy or productivity. So we have number, biomass and energy. So pyramids of numbers, they can be upright like this or inverted like this. In most of the ecosystems, pyramids of numbers are upright. মানে গোটে তଳେ producers বহুত ता ऊपर consumers start to come, several frogs start to come and gradually decrease ହେଇକିରି few snakes को गोटे vulture. तो एठी कोन होची नंबर डिक्रीज करी चलची. Also इतरे possible कि number increase करिबो ऊपर को गले केमती inverted रे. Only in tree ecosystems रे हमें देखो छु single tree से tree रे several birds अछंती तांकर numerous parasites अछंती. तो एथरे parasites अधिका गोटे bird ऊपर parasites बहुत सारा रही परिबे. गोटे tree रे बहुत सारा birds रहिबे. So एठी number with trophic level बढ़ी बारे एठी number increase होची एठी decrease. सेमती pyramid of biomass रे भी upright और inverted both रहुची. Terrestrial aquatic ecosystems रे जेमती single long tree, several birds, numerous parrot एमती है कि तांका biomass को देखो इथरे. Tree रो biomass is more than the number of birds inhabiting it or residing in it. Obviously parasites रो biomass, birds रो biomass to come. Inverted रे ओटे phytoplanktons अछि तांकर crustaceans and small fishes ताको खाउचंती and large fish ताको खाउच. The large fish रा biomass अधिका, then crustaceans आसीबे, then phytoplanktons आसीबे. Same way but pyramid of energy रे किंतु केबे inverted हबनी. सेरा सबु बेले upright cause energy जते बेले हमें गोटे ट्रॉपिक लेवल को आ गोटे ट्रॉपिक लेवल को मूव होची एनर्जी डिक्रीज करूची किछि परसेंट ऑफ अनयूजेबल हीट भाबरे एनर्जी ऊपर को रिड्यूस हे का जाउची. सेट पाई ट्रॉपिक लेवल्स आर 4 5 एट बेस्ट 6 ताठू अधिका नाही. So एठी हमर अछि न्यूमरस ग्रास प्लांट्स माने प्रोड्यूसर्स हेले से माने को हर्बीवर्स भाबरे रैबिट्स कंज्यूम करले तांको गोटे टाइगर कार्निवर भाबरे खाइला. So energy एठी with the as we go upwards energy decreases. समस्या अछंती. Yes, ma'am. Okay. Next, we have bioaccumulation and biomagnification next. These are two important topics. So bioaccumulation refers to how pollutants enter a food chain. जेमती हमारा pollution रे हमें pollutants पढ़िलु जो माने कि degrade करूथिले quality of air, soil, water. सेमती pollutants अछंती environment रे जो माने food chain रे भी interfere करंती. Food chain रे interfere करिकी food habit and again disease या number, mass and energy सबु तककु सेमाने impact पकांती. So bioaccumulation, there is an increase in the concentration of a pollutant from the environment to the first organism in the food chain. And biomagnification, it refers to the tendency of pollutants to concentrate as they move from one trophic level to the next trophic level. तांको concentration बढ़ु थाए as they move from one trophic level to another trophic, to the next trophic level. Thus, in biomagnification, there is an increase in concentration of a pollutant from one link in food chain to another. In order for biomagnification to occur, pollutants must be long-lived, mobile, soluble in fats, biologically active. Then only semane gote trophic level को आ gote trophic level को penetrate करी परिबे, concentration तांकरा बढ़ी परिबो, और long lived पाई semane अधिका time रहिबे तो next semane next trophic level को भी affect करिबे. But if it is short lived, broken down easily, so सेटा biomagnification से ही pollutant रो किछि भी हबनी. Now better example देखो जी. See, इटा हमरो हला हमरो trophic levels रो pyramids
एठी हमारा producers रहिले and next we have the other topic labels. Bioaccumulation होता increase in the pollutant concentration in one organism over lifetime. এটা কি horizontally ही रहिला. Phytoplanktons रे तार गोटे सब को भी एलिमेंट सपोज x एलिमेंट pollutant रो concentration with time बढ़ी चलिला खाली phytoplanktons रे. But in the same other case we see biomagnification increase in the pollutant concentration through the food chain. एठी x amount रो अछि याको से माने खाइले तो तांको पाखरे x1 amount हे गला concentration then x2 हे गला x3 x4 एठी बढ़ी जाउची ता concentration बढ़ुची गला से गोटे खाउ से गोटी टॉप प्रेडेटर मैमल गोटे खाउनी से 10 टा खाउथबो 10 टा भितरे एतिकी रथिबो तो ऑब्वियसली ता concentration ऊपर को बढ़ी चलिबो ए एग्जाम ए डायग्राम ता प्लीज समस्त भल से मन रखो इजी हबो तुमको डिफरेंशिएट करिया को बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन कहाँ को पचारि बार अछि किछि समस्त लाइन रे अछंती नहीं मैडम कौन तो एरा ठीक अछि ना ए मैडम एग्जाम ए डायग्राम ता प्लीज मुंडरे सेट करके रखो दीज आर एमपी सब छोट छोट जिंस टाइम सेव करबो लास्ट मिनिट रे ओके So this is biomagnification. The numbers are representative values of the concentration in the tissues of DDT and its derivatives. एठी producers रे एतिकी रहेला फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जते बळे प्रोड्यूसर्स ऊपर को फीड करिले तार 0.23 ppm हैला सेकेंडरी कंज्यूमर्स अगेन बढ़ेला tertiary consumers पाखरे 13.8 ppm from 0.04 ppm of DDT it has increased to 13.8 ppm of DDT. So how serious biomagnification can be for our ecosystem, for our food web, food chain and everything, it clearly shows. This picture clearly depicts. Next we have bio-interaction. Bio-interaction is organisms living in this earth are interlinked to each other in one way or other. The interaction between organisms is fundamental for its survival and functioning of the ecosystem as a whole. Suppose gote species A अछि and gote species B अछि. तांकर mutualism ना ये भी benefit होची ये भी benefit होची. Both the organisms A and B are benefited by the relationship or by the interlinkage they share. Example pollination रे हमें देखिबा the pollinator gets इठी pollination लिखिली pollinator जो भी insect हला से food that gets food like pollen or nectar और से plant से pollinator रो wings या legs रे pollens लागेला and gets transferred to other flowers for cross fertilization. Okay, तो इठी कहार हार्म होनी दीजन जाको बेनिफिट होचंती. Next we have competition. Competition रे both the जो species are harmed. किमती shortage of food हेई पारे तांकर. Suppose गोटे forest रे या tiger भी अछि lion भी अछि. तांकर ना tiger benefit करूची lion रा ना lion benefit करूची tiger रा. But टाइगर कंज्यूम कर दोची लायन रा फूड केबे तो लायन कंज्यूम कर दोची टाइगर रा फूड केबे जोथि पय कि अदर स्पीसीज को shortage पडुची and there is a competition. Then we have predation also species A suppose एटा होची predatory species से गोट species B को predate करूची तो species B रो किछि भी benefit होनी उल्टा species A को खाइबा को मिलुची बेनिफिट तार होची से तापरे फीड करूची तो कार्निवर्स फीडिंग अपॉन हर्बिवर्स कैन बी प्रेडेशन. देन parasitism भी प्रेडेशन टाइप रा बट एठी पैरासाइट गोटे होस्ट ऊपर आसी की रही की ताकू हार्म करूची तारा सब न्यूट्रिशन शॉक करी दोची टिक जो ब्लड शॉक करी दिए से माने होस्ट हार्म हे जाउची एठी होस्ट हे जिबो स्पीसीज बी और टिक्स माने हे जिबे स्पीसीज ए. Next we have commensalism रे one species benefits but the other is also not affected. एठी affect होउछंती other species एठी केही affect हो नाहंती. Example cow dung provides food and shelter to dung beetles.
say beetles have no effect on the cow. Cow dung gote part hi nuhe au kiछि jota ki harm karibo cow ku. ସେମାନେ cow dung ରେ survive କରୁଛନ୍ତି and they are getting benefited, otherwise no one is affected. Amensalism, one species is harmed and the other is एथरे जणे बेनिफिट होची, एथरे जणे हार्म होची और अदर जनों को किसी भी बेनिफिट होनी. फॉर एग्जांपल, one large tree shades a small plant. स्मॉल प्लांट रो ग्रोथ रिटार्ड होची किंतु लार्ज ट्री को किसी भी जणा नाही, ताको अफेक्ट ही होनी. सो नो वन स्पीसीज बी एथरे जीरो होची, स्पीसीज ए स्मॉल प्लांट अफेक्ट होची, ता ग्रोथ रिटार्ड होची. इज इट ओके? Yes, ma'am. नेक्स्ट आमर कहला कि फॉर्मूला कि गोटे क्लास एवरी क्लास रे हमें गोटे एनिमल कवर करिबा, गोटे इंडेक्स कवर करिबा, गोटे इवेंट कवर करिबा. ओके, सो एबे हमारा रिसेंटली 23rd of May से गूगल रे ना गोटे गोटे आइकन या सिंबल बेले बेले आसे पिक्चर्स, प्लीज ताकू कीनली ऑब्जर्व करूथबो. से माने गोटे गोटे डे को इंडिकेट करंती. एवरीथिंग कैन नॉट बी मॉक्ड अप. टिके प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो. धीरे धीरे सब मुंड रे रजिस्टर हे का जीवो एंड एग्जाम रे एटा ही हेल्प करिवो. सो 23rd May इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टर्टल्स डे. से पे मु एटा को पिक करिली. So everyone knows about olive ridley turtles, which arrive at Gahirmatha beach in Odisha's Kendrapada district, which is known as the largest known rookery. किए मते rookery रो definition कहि परिबो या rookery कोन किछि भी आइडिया अछि? Anyone? किछि प्रॉब्लम नै, मते भी आसु नथिला. डिफर करनी क्या था मैडम? कोन? मैम एटा भीतर करनी क्या को ये करू के? नै, rookery रो माने मैम नेक्स्ट मैम जो टोटल जो दियंती माने फ्लैग जो सेटा कोन ना मैम कोन रेफरेंस बार्ड एक बार्ड नै बर्ड होंतु कि एनिमल्स होंतु मैम कि गोटे नेक्स्ट रे गोटे नेस्ट रे ग्रुप और पेयर ऑफ बर्ड्स जदी रहबे सेटा होय. Good. पाखापाखी you are close. So rookery is some गोटे habitat जोठी की birds, animals या reptiles जे भी सिकिरी mass breeding करिवे. जेमती for example हमरा जो गहिरमाथा बीच रे एते सारा olive ridley turtles आसंती, से माने mass breeding करंती, बहुत सारा एकाठी breed करिकिरी then से माने जानती. So it is known as rookery. Hundreds of even recently एटा काहेकि न्यूज रे अछि because hundreds of vulnerable olive ridley turtles तारा scientific name टा टिके देखि देथिबो. Olivacia थिबो जदी olive ridley turtle बोली ताकू मीन करिबो किछि दिन में ता छोड़ा. As such एते significant आउ किछि रहइबानी. Olivacia सीधा olive ridley turtle से मारिबो. Have washed ashore along the coastline between Kakinada and Antarvedi in Godavari region during annual breeding season on the east coast. ସେମାନେ wash away ହେଇଥିଲେ କାହିଁକି? Because the effluents are released from the aqua ponds along the coastline, the discharges from the pipelines of the onshore oil exploration facilities. एटा एटा affect କରିଥିଲା olive ridley breeding को. तांकर जो rookeries गराक से जो आस्तिले mass breeding ପାଇଁ सेराको wash away ହେଇଥିଲେ. About olive ridley turtles, they are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world. They get their name from their olive colored carapace. Carapace ro माने के कहिबा? Anyone? Okay, fine, mu कहूची. If this is a turtle, से जो hard shell ता ऊपरे अछि एमती पैटर्न सहीकिरी ताकू हमें carapace कुहा जाए. As because a carapace ता olive color, so these turtles are known as olive ridley turtles. Known for aribada or mass nesting,
protection status तारा कौन ना WPA रे 1972 schedule 1 रे अच्छी IUCN red list रे vulnerable अच्छी and CITES appendix 1 रे अच्छी distribution तारा they are found in the warm waters of Pacific, Atlantic and Indian Oceans and breeding time रे एबे रो time रे समाने आसिकी पहुंचंती like March, February, March not एबे February, March around समाने इंडिया रा ईस्ट कोस्ट को आसिकिरी ब्रीडिंग करंती दैट इज तांका पाई बहुत ही भला एमिकेबल एनवायरनमेंट सेठी हुए in India they are conserved in Bhitarkanika National Park Odisha, Gahirmatha Marine Sanctuary again Odisha and Godavari region of Andhra Pradesh. Okay, next we have one index, Environment Performance Index, released by the World Economic Forum in collaboration with Yale Center for Environmental Law and Policy and Columbia University Center for International Earth Science Information Network. It's difficult at the mona rakhiya ko, but still you should know WEF and Yale. A dita thik hai gale, baki rest will follow. It's a biennial index started in 2002 as Environmental Sustainability Index and gradually seta Environment Performance Index asila. 180 countries are ranked on climate change performance, environmental health and ecosystem vitality and India is ranked at 188 with a score of 18.9 in EPI 2022. मते केबी कह कि ए सब परफॉर्मेंस इंडेक्स एनवायरनमेंट इंडेक्स हो तमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स हो ई सब काहे की होची व्हाट इज द इंपैक्ट इट इज हैविंग ऑन अस और अ नेशन अ कम्युनिटी और स्टेट किछि भी के कुह भूल हबो किछि नहीं इट्स ओके Ma'am, for the measurement, आमे हां एग्जैक्टली मेजरमेंट छै आमे से मेजरमेंट करू छै काहे की व्हाई मैडम इकोलॉजिकल बैलेंस ପାଇଁ ବୋଧେ गुड आमे भी ऑब्जर्व करिले कि ग्रेजुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा परे परे जति कि डिस्ट्रक्शन हे चलची क्लाइमेट चेंज एंड ऑल याको गोटे बिहेवियरल चेंज हमको दरकार एंड ए बिहेवियरल चेंज जते बेले गोटे कंट्री को मु लास्ट रैंक रे रखुची among 190 countries या 180 countries गोटे वर्ल्ड फोरम रे इंटरनेशनल फोरम रे से पूरा खराब रैंक रे रहउची एट द सेम टाइम आ गोटे कंट्री ए रे रहउची सेठी कोन आसुची से नेशन रो प्राइम मिनिस्टर वंतु तारा फॉरेन डेलीगेट्स वंतु जी भी जाई थांती सेठी की से माने कोंती नो वी हैव टू ब्रिंग some kind of changes so that our ranks will also improve plus ए इंडेक्स को देखि की भी बहुत सारा इंसेंटिव्स मिले कोन जोटा हमको एनकरेज करिवो कि आमे क्लाइमेट ओरिएंटेड स्टेप्स नबा जो थरे कि क्लाइमेटिक चेंजेस को एग्रावेट नुहे टिके पछु को आनिबा आमे जंती रिड्यूस को इंपैक्ट रिड्यूस हबा एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स नबा इकोलॉजी को केयर करी करी नेला टाइप्स रो so that's why these index एते सारा इंडेक्स हठात से केमती आसिला आगरु तो एते सारा इंडेक्स इंडिपेंडेंस टाइम रे नथिला but post that we have studied कि there's a high time need for behavioral change among the nations as a whole among the people state community and everything that's why index गराका सब सब प्रकार रा indices बाहरिला environment performance index हमारा air quality हो जो सब not only environment every kind of happiness index economic index सब index गराका बाहरला okay next we have International Solar Alliance latest data बनेची 2000 the ISA was conceived as a joint effort by India and France and a PM for the initiative with along with the nation of France and we have come up with this International Solar Alliance to mobilize efforts among against climate change through deployment of solar energy solutions. It was conceptualized on the sidelines of the 21st Conference of Parties COP21 to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC held in Paris in 2015. So, yara vision kona, let us together make the sun brighter.
एरक जेतेबेले एसे आसीबो ना किछि एनर्जी उपरे एनवायरनमेंट उपरे पोल्यूशन उपरे सब बड़े पोल्यूशन रो स्टेप ए नुहे कि रिसाइकल रीयूज एटा न लिखिकरी या फिर प्लांटेशन अफोरेस्टेशन विल नॉट यूज प्लास्टिक ऐसा समस्त लिखिबे बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट समथिंग न्यू केमती गोटे नेशन कोन स्टेप नबो दे इंडिविजुअल लेवल रे गोटे स्टेप तमे नेलो जोटा तमे लिखिलो स्टेट कोन स्टेप नहीं परिबो नेशन कोन स्टेप नहीं परिबो गोटे कॉन्टिनेंट कोन स्टेप नहीं परिबो या फिर गोटे सब कॉन्टिनेंट कोन स्टेप नहीं परिबो सो एज ए होल गोटे वर्ल्ड रो स्टेप नहीं परिबो दिस इज वन काइंड ऑफ माने एमती गोटे स्टेप जोटा कि सब कॉन्टिनेंट हो या कॉन्टिनेंट हो या इंटर डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो वो वी हैव कम अप विथ आईएसए व्हिच इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि इंडिया फ्रांस रो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स बहुत भल अच्छी फार पार्ट अच्छे आमठू जोग्राफिकल बॉर्डर शेयर करूनी स्टिल हमारा मेंटालिटी फ्रीक्वेंसी सब मैच करची दैट वी हैव एग्रीड टू कम अप विथ आईएसए okay so we should come up with some more thing जोटा कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करिबो कन्वेंशनल एनर्जीज को देखिबो एंड सब को टैप करि परिबा जेमति हमें प्रॉपर्ली सोलर एनर्जी को टैप करिले हमर डिपेंडेंसी ऑन थर्मल पावर प्लांट्स ऑन पेट्रोल ऑन कोल एंड ऑल विल ग्रेजुअली डिक्रीज एसरे लिखवाटा इज इंपोर्टेंट प्लीज रिमेंबर मैं बार बार कहूची जहाँ भी पढ़ुच एवरीथिंग एमती पढ़ो कि होलिस्टिकली यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इट एवरीवेयर okay next we have mission every home no matter how far away will have a light at home ए तांकर मिशन थिला फाइन एरा जदी बेसी मन रहउनी न रहउ बट विजन should remember the vision the headquarters is in India with its interim secretariat being set up in Gurugram with the amendment of its framework agreement in 2020 all member states of UN are now eligible to International Solar Alliance and at present 109 countries are signatories to the ISA framework agreement of which 90 countries have submitted the necessary instruments for ratification to become full members of the ISA. Okay, in its General Assembly recently the news because in its General Assembly meeting ISA approved the solar facility. It has come up with a solar facility like scheme which includes a payment guarantee mechanism expected to stimulate investments into solar projects with two financial components. One is your solar payment guarantee, other is your solar insurance fund. Solar payment guarantee funds to provide a partial guarantee and enable investments in geographies that do not receive investments. इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स को से बिलोंग करछि जोठी कि हमरा सोलर एनर्जी टैप करिबा पई जो इन्वेस्टमेंट्स द्वारा कथा है and solar insurance fund to reduce the burden of insurance premium for solar developers in pre-revenue phase of the project like solar insurance जो premium असंती तांकर से घराकर burden decrease करिया को सोलर इंश्योरेंस फंड ही आसीगला कि नो तमे ग्लोबली गोटे या फिर गोटे यूनिवर्सिटी जो इंश्योरेंस अच्छी से फंड रू नहीं करी बिकॉज सोलर को टैप करिया को या लोगों को मोटिवेट करवा इज डिफिकल्ट अगेन इंश्योरेंस प्रीमियम्स द्वारा करा बर्डन भी बहुत ही था तो सोलर इंश्योरेंस फंड विल बी बियरिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम burden and solar payment guarantee. ISA recently in news thila 21st COP21 2015 India and France and the vision. This is important. Okay. So thank you everyone. अब आपके जो doubts अच्छे यदि पचारे पराजी में जल्दी ही साथ दिली समस्त पर doubts सुनी परिबी. मैम 10% एनर्जी फ्लो लॉट है बुझे 10% एनर्जी हाँ इतने हमें जो हमारा ट्रॉपिक लेबल्स वगैरह का था है ना सपोज इटा हला प्रोड्यूसर नेक्स्ट हला हर्बीवर्स देन योर कार्निवर्स देन योर टॉप कार्निवर्स ये जेती की प्रोड्यूस करूची यारा 10% जाउची यारा नेक्स्ट 10% एठी जाउची यारा 10% जाउची दैट इज योर 10% लॉ मैम कल तो है बुने जीरो हो जीवो ना एनर्जी तो जीरो हो जीवो
ସେଇଥିପାଇଁ ତ 5ଟାରେ ହିଁ ସରି ଯାଉଛି 5ଟା 6ଟାରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତ 0 ହିଁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି କିଛି ନଥିବ ହିଁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ତ ଫିର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ ନେକ୍ସଟ କୋଉ ପଢଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭୁନି ଟିକେ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କୋଉ ବହିରୁ ପଢଉଛନ୍ତି? अच्छा को बही मु तो टिके मल्टीपल सोर्सेस मो पाखे देखो टाइम अच्छी मल्टीपल सोर्सेस को देखिकी खोजिकी करिया को बट आपण मानन को तो मु रिक्वेस्ट करिवि गोटिए बही को स्टिक करंतु गोटिए बही को भलसे रिवाइज करंतु फॉर स्टैटिक पार्ट for your current affairs part you can refer to 3-4 sources but इतने ज़्यादा टाइम नहीं हम पाखे तो 1-2 को करंतु मु जनरली शंकर आईएएस तो समस्ते ही पढ़ती मु शंकर आईएएस देखे किछटा गूगल करे NCERT is important NCERT diagrams please समस्त को बार बार कहूँ NCERT diagrams are important these are mark fetching things और या diagrams द्वारा को बहुत ही ज़्यादा informative एते इन्फॉर्मेशन ना कोड मु एते बही देखिलिनी एनसीईआरटी परिका डायग्राम्स करा को रेयरली अवेलेबल आरथर का से जो बायोम्स रो एग्जांपल देइथिली बायोम्स रो से जो ग्राफ टा को भी मु एनसीईआरटी रु ही उठेइथिली तो एनसीईआरटी डायग्राम्स देखिबे शंकर आईएएस रो थ्योरी अच्छी भलो अच्छी प्लीज एबेठू ही पढी की ताको रिवाइज करंतु एंड करंट अफेयर्स पाई मु एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स पाई मु पीटी 365 ही देखुची या कभी कभी इनसाइट्स रो भी देखि दउची इनसाइट्स टिके इजियर लैंग्वेज रो अछि बुझिया को इजी हबो कहिबी भी इनसाइट्स को पढिया को भी पढी पारंते मैडम एनसीईआरटी कोଉ क्लास रे? कणा एनसीईआरटी कोଉ क्लास रे? एनसीईआरटी 11 12 ही पढ़ियार अछि हमर बायोलॉजी बुक रो लास्ट दीटा चैप्टर्स एनवायरनमेंट रिलेटेड अछि प्लीज से दीटा को ही पढंतु आ किछ ना एनसीईआरटी सच ये प्राइमरी ता 7th 8th क्लास रे किछि तार एनवायरनमेंट स्पेसिफिक बुक नाही एसएसटी रे ज्योग्राफी टा को हमें किछिटा पार्ट तार एनवायरनमेंट सहित लिंक्ड अछि हमें सेरा पढुथुलु बट मु कहबी 11 12th रो बायोलॉजी बुक टा को देखिया को नॉट ऑल लास्ट दीटा चैप्टर्स मु नेक्स्ट टाइम नाले लिंक पठे देबी मु ग्रुप रे छाड़ देबी जति की चैप्टर्स पढियार अछि मु सेति की पठे देखे देबी सेति की समस्त देखि देबे काइंडली से डायग्राम्स करा का एग्जांपल्स करा का यस मैडम कोन कहले यस मैडम हां आउ कार किछि डाउट्स अछि आ क्लास ठीक अछि या फिर मते आउ फीड इन करियार अछि इंफॉर्मेशन या डिफिकल्ट ही जाउची यस नहीं मैडम ठीक अछि मैडम पूरा मोर फास्ट क्लास ठीक अछि नै कोन हेछि हेलो हां मैडम ठीक अछि मैडम अच्छा फर्स्ट क्लास टा कोन थिला डिफिकल्ट थिला मैडम फास्ट क्लास के पीडीएफ देखले बोई देखले ଟିକେ बुझी हबो ओके ओके हाँ ठीक ठीक सो दिस इज बेसिकली मोर एगरा का क्रैश कोर्स सेशंस जदि एलाबोरेटली पूरा प्रॉपर क्लास करियार अछि प्लीज रिक्वेस्ट करा से व्हाट्सएप ग्रुप रे पुट अप करतु मु प्लान अकॉर्डिंगली करिवि कि पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट क्लास हबो आ एठी 8टा सेशन रे मु सब कवर करि परिबिनी वी आर लेफ्ट विथ द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग and ecological succession भी अच्छी nutrient cycling रे तो हम जति की biogeochemical cycles अच्छी से water cycle carbon cycle sulfur cycles and all सेटा मु नेक्स्ट क्लास रे पूरा एलाबोरेटली देख पढेबी नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली टिके हेक्टिक हे पारे टिके अधिका टाइम त मु प्लान करूची संडे अडको नबा को सेटा को तो टिके हमें से दिन अधिका टाइम दे परियो जेमती मेजर पार्ट से दिन कवर कर देबी थ्योरी रो नेक्स्ट आउ कार किछि डाउट्स अछि या किछि पचारियार अछि बुझिबार अछि मैम हमर जो शंकर आईएएस रे कोन हम फुली जेतिकी कोर्स अछि ताको पढियो पडिबो कि सिलेक्टिव टॉपिक पढियो पडिबो सी शंकर आईएएस रे बहुत जिंस अछि बहुत पिला सब पढी दियंती जदि साइंस बैकग्राउंड रो ताल तो तांको किछि किछि जणा थाए दे कैन इजीली
go through the book and ସେମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ନୁହେଁ ହଁ you should go through it। ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପେଜରୁ ତ କଲେ ସରି ପାରିବନି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ରହିବନି। ସବୁଦିନ କିଛି 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 ଯଦି 5ଟା ପେଜ ଦେଖିଦେବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ସ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସକୁ ଦେଖିକି ବି ଯଦି ଲିଟରେଚର ପଢିଲେ well and good ହବ ଭଲସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସବୁଥରକ କହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଥରକ ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ସରିଯିବ ସେତିକି ଟେନସନ୍ ପଳେଇବ। ବିକଜ ୟାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବା ପସିବଲ ନୁହେଁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବାନି। ରାଦର ଆମେ ଇକୋନୋମିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ସେତିକି ବେଳକୁ, GS3 ବେଳକୁ या प्रिलिम्स बेलू आम अन्य जिन रिवाइज कर पारिबा कि को प्लेसेस एबे न्यूज रे अच्छी, किए नोबेल प्राइजेस कौन पाइले, कौन साइंस रे कौन अच्छी, से गुराक आम देखा। बट एनवायरनमेंट वी शुड बी प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द एग्जाम। एटलिस्ट 1 मंथ पूर्व एनवायरनमेंट पेपर करी थोई दियो, से जम सेटा तमरा मार्क फेचिंग टाइम सेविंग हबा दरकार। वी कैन ऑल्सो स्टार्ट आम ये आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करवा 8टा सेशन सरू। मेन्स पाई आंसर राइटिंग भी मु स्टार्ट करिया को प्लान करूची। बट आगे इटा सरू समस्ते टिके बेसिक बुक भी तो पढ़ की सारी दियंतु समस्ते। इन केस जोटी बुझी होनी से व्हाट्सएप रे मते से ग्रुप रे एनवायरनमेंट इकोलॉजी ग्रुप रे, बिकॉज मु सब पार्ट कवर करूनी। सो जहाँ को जोटी डाउट होची ना सेठी गोटे मेसेज ड्रॉप कर, मु देखिकी ताको रिप्लाई करिदेबी। एंड इफ यू थिंक कि गोटे टॉपिक मैम डिस्कस करियार अच्छी, प्लीज एक गोटे टॉपिक समस्त मिसिकी इधर डिस्कस कर। मु सब टॉपिक डिसाइड करि परिबिनी, डिस्कस करि परिबिनी। गोटे टॉपिक उठाओ, मु गोटे दिन गोटे क्लास नेबी जोथरे कि समस्त टॉपिक्स गरा को जहार जहार नीड अछि सेटा को भी डिस्कस करिबी। मैम सीसैट ପାଇଁ କେତେ କଣ କରିବୁ? सीसैट पाई सीसैट रो जो बुक्स आसुची, सी ओपीएससी रो सीसैट इज नॉट दैट टफ। बस टाइम हबनी तुमको कोथरे से जो कॉम्प्रिहेंशंस गरा का अनसीन पैसेजेस गरा का आसीथिबो। फर्स्ट थिंग जति कि मैथ्स क्वेश्चन अछि सॉल्व करके साथ दबो। बिकॉज जस्ट खाई की पस्थिबो ना हॉल रे फास्ट एंड फ्यूरियस है कि मैथ्स क्वेश्चन जति कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन अछि साथ दबार अछि। नेक्स्ट तमे अनसीन पैसेजेस करू थाओ लास्ट जाके, लास्ट 15 मिनट्स छाड़ी दबो, 15 या हाफ एन आवर छाड़ दबो। ता पूर्व जाके जते खर्च करो ने डार्क कर दियो, जति कि तमारा ऑप्शंस को डार्कन करी सारी करी गोटे दिटा या चारटा अनसीन पैसेजेस रहूथुबो, सेटा भी तमे गोटे गोटे पढ़ी की ग्रेजुअली कर दबो। एमती करी की टाइम मैनेज करबो। एंड प्रैक्टिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। सीसैट रो बुक्स भी अवेलेबल अछि, मु तो सेमती प्रिपेयर एलाबोरेटली करी नथिली। But you should go through केबे केबे टिके जतले निद लागुथबो, you can do this maths quantitative aptitude questions जो आरएस अग्रवाल या जहार भी आसुची बुक्स टिके देखि परिबो। That will help you in every competitive exams। मैम आपण आगुरु टिके क्लास करते नहीं नथांदा कोन कहले? मैम आपण मार्च मासरु क्लास करते नहीं नथांदा मार्च पूर्वरु एबे डेरी हे जाउची कि ये डेरिया बोली हाँ ठीक किछि नहीं, मो सार माने क्लास जदि किछि दरकार अछि से मेसेज दियंतु। मार्च पूर्व तो हेई पानी मो पछकु जाई कि टाइम चेंज करि परिबिनी। बट आई हैव एबे यदि बेनिफिट होथो नाले किछि यदि एमती डाउट्स अछि या को भी क्लास हमें फर्दर करिया को चाहू, बिकॉज एनवायरनमेंट लेंदी अछि नो डाउट, बट सेते डिफिकल्ट नुहे जति कि ये करिया भाबुचे हमें। यार करंट अफेयर्स गरा को टिके हाई एंड रखी प्रिपेयर करिले मार्क्स इजीली अचीव हो जिवो। किंतु आगो खत्म करियार अछि, जो गरा को इजी स्टफ ना ताको आगो फिनिश कर दबा कथा। मैम एटा को ग्रुप टा की कोन कहले? बोले एटा ग्रुप टा कोटा ग्रुप टा This is काई नाही तो environment and environment and ecology group टा ना ओपीएससी मेंटर्स रो। अच्छा जो ओपीएससी में टेलीग्राम रो की ना व्हाट्सएप रे अछि? तो व्हाट्सएप रे लिंक ही दिया आइतला।
ଆଜ୍ଞା कौन कहले मैम व्हाट्सएप रे जो ग्रुप अछि हम ସେଥିରେ नाहु केमति जॉइन करिवो ओके जॉइन केमती से गोटे टेलीग्राम रे गोटे लिंक दिया होइथिबो सेइथुर भी जॉइन करि परिबे अच्छा यदि नथिले तो फिर केमती जॉइन करिले आजिरो क्लास टेलीग्राम लिंक रो नाइ मैम गोटे व्हाट्सएप रे ग्रुप 4 रो कलिंगेस रो ग्रुप अछि ସେଥିରେ लिंक प्रोवाइड करथिले तो एपी जस्ट जॉइन करलानी अच्छा ठीक अच्छे बट ओपीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी गोटे ग्रुप अच्छी देयर यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस और जब क्लास ने भी मु ता टाइमिंग्स भी मु कहि दे मु कहबी या फिर जे प्रियवत भाई भी कहि परबे या फिर पूजा भी कहि परिबो के भी बट मु कंफर्म भी करि देबे कि मोर क्लास नबार अछि आज्ञा मैम थैंक यू मैम ओके ओके चलो फिर मैम ठीक ओनली अछि एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स रो क्लास होची कि अदर किसी क्लासेस भी होची इकोनॉमिक्स नुहे मु एनवायरनमेंट इकोलॉजी नउची ओके ओके एंड अन्य माने अन्य सब्जेक्ट्स नउचंती बट मैम ए आप ग्रुप रे मु कहबी हां कुआ कुआ कहली मैम केतेटा क्लास हेलानी एनवायरनमेंट रो सेकंड क्लास ओके मैम फर्स्ट क्लास यूट्यूब रे अच्छी देखि पारो बट मु प्रेफर करी कि लाइव क्लासेस रे रुहो बिकॉज यूट्यूब आम माइंड रे सेट थाए कि हाँ यूट्यूब देखिदेबी कहि कि एग्जाम डे आसी जिवो कि देखि परिबानी मैडम यूट्यूब रो को चैनल टा की ओपीएससी मेंटर ना कोड इसे शेयर कराई छी हाँ से ओपीएससी मेंटर रे अच्छी ओपीएससी मेंटर रे अच्छी एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्लास रो फर्स्ट सेशन टा अच्छी आइए मैडम ଟିକେ शेयर करते करा এই পিডিএফ টা पीपीटी टा शेयर करिवि सेथरे क्लास रे अच्छी ओके मु 8टा सेशन मोर सरी जाऊ देन आई विल शेयर द पीपीटी पूरा एंटायर थिंग टा को मु शेयर कर देबी मैम क्लास तो किसी फिक्स डे अछि ना सेमति आपण जेतरो फ्री रहउछन्ती नै जाउछन्ती मो एक्चुअली मोर वर्क प्रोफाइल रे मते फिक्स करिया डेट्स टिके डिफिकल्ट होची मु ट्राई करूची फिक्स करिया को एटा मोर सेकंड क्लास मु नेक्स्ट क्लास टा मोस्ट प्रोबेबली नो श्योरली संडे नेबी बिकॉज हमको बहुत बड़ पार्ट से दिन कवर करियार अछि मु समस्त को टाइम भी अधिका नेबी 10टा राती हेले मु बेसी एक्सटेंड करि पारुनी क्लास को संडे दिन प्लीज समस्त टाइम रखिथिबे मु करिवि तापरे ग्रेजुअली मु वीकली धीरे क्लास रखिबि ओके मैम हाँ बट संडे मु गोटे क्लास एवरी संडे मु गोटे क्लास रखिबि सो जोटा कि टिके मोर लेंदी क्लास हबो ओके मैम चलो फिर आउ काकू किछि पचारे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओके मैम थैंक यू ओके थैंक यू गुड नाइट थैंक यू मैम गुड नाइट